अस्सलाम वालेकुम। दाराशिको हाशमी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। 26 मार्च 2022 रात का 11:15 बज रहा है पाकिस्तानी महरी वक्त के मुताबिक। जनाब अली, दिन में 1440 मिनट्स, 86,400 सेकेंड। और जनाब बात ये हो रही है कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, कच्चा बादाम चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कुछ खरीद रही हैं, बेच रही हैं। किसी ने कहा कि जनाब फिल्म इंडस्ट्री में ये चल रहा है, किसी ने कहा जनाब स्पोर्ट्स के अंदर ये चल रहा है, किसी ने कहा कि म्यूजिक के अंदर ये चल रहा है, किसी ने कहा नेटफ्लिक्स में नई सीरीज आई हुई है, XYZ। मैंने सेशन किया, उसमें सवाल उठाया, जनाब मुझे एक बात बताइए, ये जो आपका करंट फाइनेंशियल कंडीशन है इस वक्त, आपकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन, कि जितना पैसा आप कमा रहे हैं और जितना पैसा आपके अकाउंट में है, या आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, आपका करियर है, आपकी एजुकेशन है, क्या इन चीज़ों से आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं। जब आप उन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं, तो फिर आपके पास ये वक्त कहाँ से आ रहा है कि कच्चा बादाम और पक्का बादाम और जनाब ये पॉलिटिकल रूलिंग पार्टीज और जी बॉलीवुड में ये हो रहा है, लॉलीवुड में ये हो रहा है, म्यूजिक में हो रहा है। कम ऑन, आई एम नॉट सेइंग कि इनको मत देखें, बिल्कुल देखिए, लेकिन 1440 मिनट में से 20 मिनट या 40 मिनट अपनी डेवलपमेंट के लिए निकालिए। अक्सर दफ़ा ये होता है कि हम क्या करते हैं, हमें किसी फील्ड में डाल दिया जाता है और हम अंदाजे से मामला चलाना शुरू कर देते हैं। अंदाजे से अगर आप मामला चलाएंगे तो तबाही आपका मुकद्दर बन जाएगी। ये वो बात हो गई कि मैं गन या तीर कमान आपके हाथ में पकड़ा दूं और मैं कहूँ चलाओ इसको, चलाओ। अब आपको पता ही नहीं है निशाना कहाँ लगाना है, आप अंधाधुंध चलाए जा रहे हैं। इससे आपकी एफर्ट भी लग रही है, आपकी एनर्जी भी जा रही है, वक्त अलग बर्बाद हो रहा है, रिजल्ट आ नहीं रहा, क्योंकि आप इस उम्मीद में कि कहीं तो निशाने पे लगेगा मेरा तीर। जब आपको निशाने का ही नहीं पता, हाउ एग्जैक्टली you're gonna do that, right? So the first and the most important thing, वो हजरात या वो खवातीन जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाइव देख रहे हैं। दूसरा, वो लोग जो इसको रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दाराशिको हाशमी को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब हमें पता है कि हमारी करंट कंडीशन से हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो फिर हम उसके लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? हम उसके लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? हम आखिर कोई किताब, कोई पॉडकास्ट, किसी से कन्वर्सेशन करना, कुछ नई चीज़ सीखना, कोई नई स्किल सीखना क्यों नहीं कर रहे? लेकिन हमें इंफॉर्मेशन सारी है, हमें सब पता है कि इस वक्त मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, हमें सब पता है कि इस वक्त फला गाना जो है उस पर इतनी हिट्स है, हमें ये पता है उसकी ट्रेंड के ऊपर ये ट्विटर पे ये ट्रेंड है, पॉलिटिक्स के अंदर ये चल रहा है। उसका फायदा क्या है? What exactly is the benefit of it? I mean, if there is any spiritual benefit, please tell me. If there is any economical benefit, please tell me. If there is any physical benefit, please tell me. If there is any mental element to it, that it gives you some kind of a liberation when you find out about this bullcrap that is around you, please let me know and I'll do that same. एक और बात यहाँ पे आती है कि अक्सर लोग ये मानते हैं कि आपके पास जनरल नॉलेज बहुत होनी चाहिए. You must have a lot of general knowledge around you, and the way they portray it and the way we've been told from our parents and everything, that you must be equipped with a lot of general knowledge. I mean, the statement itself, it says, is kind of flawed. General knowledge, आज के ज़माने में general knowledge का as such कोई scope नहीं है. अक्सर लोग ये पूछते हैं ना, scope किस चीज़ का है? Specialized knowledge का है. कोई एक फील्ड पकड़िए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, पता कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, लोगों से मिलिए. किताब पढ़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, उठा के बाहर फेंक दीजिए, लेकिन किताब के मुताल्लिक लोगों के साथ बातचीत करते हुए उसका इंफॉर्मेशन निकालिए, नॉलेज एक्वायर कीजिए. 1440 मिनट में से 40 मिनट आप अपनी डेवलपमेंट को दें. अब मैं यहाँ पे बात खत्म नहीं कर रहा. 40 मिनट किस तरीके से दें? मॉर्निंग 10 o'clock, 10 मिनट्स, आफ्टरनून 10 मिनट्स, इवनिंग 10 मिनट्स, नाइट 10 मिनट्स, हो गए 40 मिनट. 40 मिनट का मतलब है 10 मिनट अगर आप एक चीज को दे रहे हैं, 10 मिनट का मतलब ये है कि हफ्ते में आपने 70 मिनट उस चीज को दे दिए, विच इज मोर देन 1 आवर. महीने में आपने 300 मिनट उस चीज को दे दिए, विच इज अबाउट 5 आवर्स. उस एक चीज के ऊपर आप 5 घंटे लगा चुके हैं. देखें जी, किसी भी बहुत बड़े आदमी की अगर लाइफ को देखें, आप स्टडी करें, चाहे वो रूहानियत की बुलंदियों पे हो, फाइनेंशियल बुलंदियों पर हो, मेंटल बुलंदियों पर हो, या फिजिकल बुलंदियों पर हो, उसने एक काम को पल्लू से बांधा हुआ है, क्योंकि वो साड़ी नहीं पहनता होगा. अगर वो औरत है तो पहनती होगी, लेकिन वो पल्लू से बांधा हुआ है. वो ये है कि these massive leaders and these massive successful people have sweat the small stuff. जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके ऊपर उन्होंने जान तोड़ मेहनत की है. मिसाल के तौर पे, अगले 30 मिनट में मैं क्या करने वाला हूं, अभी एक बहुत छोटी सी चीज है,
30 मिनट का क्या है यार, मैं यहाँ से उठ के भाग गया, 2-4 बात की, मैसेज देखे, व्हाट्सएप देखा, यूट्यूब देखा, 30 मिनट खत्म हो गए। उस 30 मिनट को अगर आप हाइपर फोकस में लेके जाते हैं, जेम्स क्लियर की बुक है, जरूर पढ़िएगा, हाइपर फोकस। हाइपर फोकस ये बताती है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोकसेस। सो यू हैव अ हाइपर फोकस व्हिच मींस कि आप एक चीज को सामने रख के आपने सब कुछ छोड़ दिया, 10 मिनट के लिए आप उसमें गर्क हो गए। जब आप उसमें गर्क हुए तो आपका अल्टीमेट एम क्या था? अक्सर ट्रेनर्स ये बात नहीं बता रहे होते। क्यों नहीं बता रहे होते? क्योंकि एंड रिजल्ट आप सामने रखें। आपने कहा यार ये मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा या ये एक लेक्चर सुनूंगा या इस चीज के बारे में, मिसाल के तौर पर पियानो सीखना चाह रहा हूं मैं, पियानो में 10 मिनट लगाऊंगा, तो एंड रिजल्ट में मुझे क्या मिलना चाहिए? वो एंड रिजल्ट आप लिख लीजिए कि 10 मिनट के या 60 मिनट के या 30 मिनट के एंड पे ये रिजल्ट आना चाहिए। अब आपका जो ब्रेन है वो आपके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। दिस इज क्रूशियली इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज हमें ये बता दिया जाता है कि मेहनत करो, टाइम टेबल बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, टाइम मैनेजमेंट करो। ये तो वो बात हो गई कि मैं एक बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, क्या यार इसको तो बुखार है, मैं डॉक्टर को चिपड़ा मार के कहूंगा मुझे पता है इसको बुखार है, थर्मामीटर बता चुका, तू कोई नई बात बता, बुखार है, इससे छुटकारा कैसे पाना है ये मुझे बताओ, क्या रेमेडी करनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन सी क्या कहते हैं उस पर परहेज करना है, मुझे ये बताओ। दिस इज द थिंग व्हिच इज काइंड ऑफ एब्सेंट राइट नाउ बिकॉज पीपल टेल यू व्हाट यू वांट टू लिसन टू। ओ ये स्टोरी वो स्टोरी, नो, स्वेट द स्मॉल स्टफ। छोटी से छोटी चीज के ऊपर एक्सट्रीम मेहनत करें। 30 मिनट का आपके सामने टाइम आता है, 30 मिनट में आपने क्या अचीव करना है, और ये मत कहें अपने आप से कि 30 मिनट से क्या हो जाता है। 30 मिनट को आप 300 से मल्टीप्लाई करें, 65 दिन आप निकाल दीजिए, 65 दिन छुट्टी के, ईद के, फला के, डिमका के निकाल दे साल के। 300 दिन अगर आपने 30 मिनट एक दिन पे किया तो ये कितने मिनट बन जाते हैं? 300 मल्टीप्लाई बाय 39,000 मिनट्स। आप सबके पास कैलकुलेटर है, इमेजिन करें 9,000 मिनट्स कितना बनता है, कितना आपने मवाद इकट्ठा कर लिया। आपका अगर आपको राइटिंग का शौक है 30 मिनट्स राइटिंग, आपको रीडिंग का शौक है 30 मिनट्स रीडिंग, आपको म्यूजिक बनाने का शौक है 30 मिनट्स फॉर दैट, आपको पियानो बजाने का, गिटार बजाने का शौक है 30 मिनट्स फॉर दैट, आपको मॉडलिंग का शौक है 30 मिनट्स फॉर दैट, फैशन का शौक है 30 मिनट्स फॉर दैट। 30 मिनट्स करके आपने, लेकिन इसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। आपने कोई भी जो आपने टाइम बना लिया कि यार मैंने रात 11 से 11:15 बजे तक 15 मिनट मैंने दुनिया जहान से बेखबर हो जाना है। शुरू के 4 दिन खवातीन हजरात बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन उसके बाद एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा, आप एक फील में आना शुरू हो जाएंगे। अब आपको पता है 11 बजे ठक से आपको पता है व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग दैट यू हैव मेड कमिटमेंट टू। ये नहीं कि उठा के कोई टिकटॉक की वीडियो देख रहे हैं तो जी फला पोस्ट देख रहे हैं, क्योंकि देखें व्हाट हैपेंस, आप जब मोबाइल हाथ में उठाते हैं तो आप स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, एक चीज आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, वो वही चीज आपको दिखा रहा है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। दिस इज द डार्क साइड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट विल पिक अप ऑन द स्टैटिस्टिक्स कि कौन सी पिक्चर, कौन सी वीडियो पे दाराशिको देर तक रुका है, वही चीज वो मुझे बार बार दिखाएगा। व्हाट एम आई गोना डू? एम आई गोना थिंक समथिंग? नो, हाथ में फोन है, I'm just going to keep scrolling, right? So the thing that I would like to see, it is there, and I'm watching it right now. So what happens when I'm watching it right now? Then the next video that comes in, that's according to what I'm looking for, I'm craving for. It's not something which is out of the magic. It just pops up on front of your screen. No, it's an AI program. It's designed like that. So you get stick with the mobile phone. You get stick to that screen. You don't do anything else. ये programmed है, ये एक नशा है, and this is so evident. हमें ये लग रहा होता है कि नहीं यार, we look at it and we kind of scroll it and oh yeah, this is a nice one, and then next one, oh yeah, this is a nice one. What's happening? Your time is being consumed and you're getting a kick, a high by the dopamine released in your brain. मैं बार-बार dopamine की बात करता हूँ अपने lectures के अंदर because it's an addictive chemical. 1970-80 के अंदर लोग डोपामीन किक्स लेते थे क्रिएट करके चीजों को, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग यूनिक. They used to create stuff and through that way they get the kick. If you want to get the kick, create something. If you want to get the kick, commit to yourself with something and get the result and then you'll get the kick. For example, अब मैं आपसे कहूँ कि 8 फुट लंबी बार है, उसके ऊपर छलांग मारें. You'll be like, what the hell are you talking about? You're freaking crazy or something. It's not possible, right? मैं आपसे कहता हूँ 1 इंच लंबी दीवार है, उसको छलांग मार दो. I'd say write it down. I'm gonna jump over that wall, which is about 1 feet or 1 inch, something like that.
जब आपने वो अचीव किया तो आपका ब्रेन, योर ब्रेन वुड इमीडिएटली रिलीज द केमिकल व्हिच इज डोपामीन. You'll feel happy. You'll be like, wow, I just did it. What I committed to myself to this task, and I just achieved that. Through that way, you get the positive kick of your dopamine in your brain. However, right now, the dopamine is being getting kicked in your brain through consuming. Now, that could be your food items. खाने की चीजें हो सकती हैं. KFC मंगा लिया, McDonald's मंगा लिया, consumption कर ली, kick मिल गई. Kick के बाद हुआ क्या? आप एक फैमिली पैक लेके अपने पेट के आसपास घूम रहे हैं. ऐसा ही है. That is crucially important for us to understand that अगर हम कंज्यूम करके किसी चीज से किक ले रहे हैं तो हम एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं. See, the big difference between addiction and passion is if you consume something and then you get a kick through that consumption, that takes you to the downside of addiction. You know, your drugs, your cigarettes, your alcohol, anything to do with, you know, addiction sort of thing, that you're getting the kick by consuming something, bam, you're getting the kick of dopamine through addiction. On the other hand, you achieve something, aapne kuch chota sa task. I'm not asking you to big freaking task. No, a small little task. And then at the end of the task, 30 minutes का task किया ताकि वो फौरन पूरा हो जाएगा. अच्छा, वो टाइमलाइन छोटी होती है तो आपको फौरन करना होगा. आप फौरन करेंगे, 30 मिनट्स के बाद आपको रिजल्ट मिला, आपका ब्रेन रिलीज करेगा डोपामीन, and you'll be like, wow, this is amazing. What's gonna happen? You get a hang of it. You get a hang of it. लोग मुझसे पूछते हैं, तूने इतना वजन कैसे कम कर लिया यार? And I'd say, you know what? I didn't do nothing. I didn't do anything. No exercise, no nothing like that. I mean, a lot of people would hate me right now. The fitness industry. But let me tell you something. I communicated with myself. मैंने अपने आप से communicate किया. When I was urged, I had the urge to eat something like a burger, fries, pizza, you name it. You know, biryani, pulao. Oh my God, I'm so hungry right now. So what I did, I completely, वो 5 मिनट मैंने अपने आप से कमेंट किया कि 5 मिनट मैंने गुजारने हैं इस thirst के साथ, you know, with this urge that I have. I'm going to go through this urging pain that I have, that I would like to eat that, right? So मैंने क्या किया, मैंने वो 5 मिनट गुजार दिया. जैसे ही वो 5 मिनट गुजरे, वो जो भूख का urge था वो खत्म हो गया. जब वो खत्म हुआ, what's going to happen? मेरी 44 इंच की कमर से वो 31 पे आ गई. But it took a lot of months. कभी भी किसी की फिल्म रील की 30th जो रील होती है उसको अपनी सेकंड रील से कंपेयर मत कीजिएगा, अदरवाइज यू विल फॉल इनटू द weird circle of getting frustrated and depressed. अगला बंदा उस सेकंड रील को गुजार के 30th तक पहुंचा है, so you gotta take the steps. Otherwise you keep consuming. अब वो कंजम्पशन सिर्फ खाने की नहीं है. The consumption is of music, the consumption is of films, the consumption is of stupid ass music videos like the TikTok videos. I mean, I watch TikTok all the time, but don't get addicted to it. People say कि यार आप कोई सीरीज क्यों नहीं देख रहे? The moment I realize कि मुझे सीरीज से मैं हुक होने वाला हूँ, I take a step back. एक किस्त दो किस्त के बाद मैं छोड़ देता हूँ. Why would I get a kick in my brain of dopamine by consuming something? Why can't I just do the kick by creating something, right? So I write something. So I do something like personal development, like reading a book or listening to a podcast. 1440 minutes, 1440 minutes, and all I'm asking you humbly to invest 40 minutes in a day on yourself. 10 minutes for running, for example, if you want to run, please do that. 10 minutes for reading, if you want to read something, please do that. 10 minutes for music, you know, something soothing, something relaxing, do that. और रात में जब आप लेटने लगे, आप कहें यार ये 40 मिनट्स का सेशन बनाया था मैंने किया? Yes, मैंने किया. हर 10 मिनट्स के बाद अपने आप को रिवॉर्ड करें. You know, small little rewards. मैंने कहा ना, the legends always sweat the small stuff. You gotta sweat the small stuff. वो क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ नाम, Usain Bolt. The guy said that I worked my ass off for 9 years to win those 10 seconds. So people see those 10 seconds. Don't freaking see those 10 seconds. The amount of time he's invested in the last 9 years. Why can't you see that? Because that would take you to the painful process. Oh my God, that's super painful. सुबह 5 बजे उठ के भागना, फिर खाना, फिर जिम में टाइम निकालना. You know, anything. Whatever you want to do. I'm not asking you to go and compete with Usain Bolt. No. But something that would excite you. आपको फैशन डिजाइनिंग का शौक है, प्लीज बाय ऑल मींस कल वो पेन पेपर निकालिए, कोई डिजाइन कीजिए. आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, फेसबुक पे लगाइए.
कोई लड़की लड़का आपको मिल जाएगा कि हाँ मैं सी देता हूँ आपके लिए, आप उसे सिलवाइए, इंस्टाग्राम पे लगाइए, पोस्ट कीजिए, पैसे बनाइए. Get the kick by creating something rather than consuming something. And that's exactly what is happening with the mobile phones. You're sick with that, getting dopamine. You're sick with that, getting dopamine. It's a loop. We're stuck in the freaking loop, including myself. So please, 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 my humble request, 40 minutes a day. It's going to be 280 minutes a week. And it's going to be, what, 30 days ke upar, 40 minutes ko aap zara lagaye, 30 to 40, I believe it's 1200 minutes. In a month, you're investing 1,200 minutes in a month. Imagine the amounts or the type of person you will be in the next 12 months. Imagine that. 10 मिनट है, physical appearance को change करना है. Do something about it for 10 minutes. Facial exercises हैं, आपकी waist की exercises हैं, chest की exercises हैं. Do something about it. Get yourself enrolled in that program. Bodybuilding.com is filled with information like that. But again, वो पेन कौन उठाए, कौन सर्च करे? नहीं छोड़ो यार, बेड पे लेटे आराम से ये कच्चा बादाम पक्का बादाम देखते रहे. What the hell man, come on. जब अपनी कंडीशन से खुश नहीं है तो why can't we do something about it? If you're happy, if you have money like Jeff Bezos and Elon Musk, if you have the fitness like Arnold Schwarzenegger, if you have spirituality like all the big spiritual people, तो फिर ठीक है, आप ये सब देखिए. अगर नहीं है तो हमारे पास टाइम नहीं होना चाहिए यार ये सब देखने. न्यूज का, पॉलिटिक्स का, gossips ka. Everything is like what, cheese. It's just terrible. I mean, cheese is amazing. I'm just talking about the cheese, which is terrible. So please invest. Don't spend the time. Invest the time. Because when you spend, you won't get the return. You get the immediate return. अभी फॉरन जाके टीवी देख लूँ, अभी जाके नेटफ्लिक्स देख लूँ, फॉरन रिटर्न मिल जाएगा, प्लेजर मिल जाएगा, खुश हो जाऊंगा. लॉन्ग टर्म में क्या होगा? तबाह बर्बाद हो जाएंगे. इसलिए कहते हैं कि the thing that makes you comfortable would destroy you in the future. And the thing that makes you super uncomfortable would eventually yield the amazing returns for you in the future. So don't spend the time, invest the time. Spending, it's gone. Investing would return in amazing returns. The amazing returns that you cannot possibly even think of. लोग मुझसे कहते हैं, "अबे यार, क्या बात कर रहा है? किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता." My other statement is my entire business is based on book reading. You tell me, how can you say that किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता? पूरा कारोबार चला रहा हूं मैं किताब पढ़ने से, सोचने से, बात करने से. Because it is my passion. I love to interact with people and that's how I get my kick. A humble request, 1440 minutes, 30 minutes ka target, 10 minutes every morning, afternoon, evening, night. At the end of the 10 minutes, once you achieve the target, reward yourself with a cup of tea, coffee, music, out there, hanging out with your family members, whatever. Reward yourself immediately and get the dopamine kick through creating something rather than consuming something. ठीक है जी, रात के 11:10 हो चुके हैं. इख्तिताम पजीर होता है अब ये प्रोग्राम. यहाँ पे अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर. And a humble request, I'm going to write my your YouTube channel link in one of the comments here, and I would request you humbly, please go there and subscribe it. कितना मेन स्ट्रीम बात की है मैंने यार. देखो, सब्सक्राइब करना नहीं करना entirely your choice. अगर कर लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं करोगे क्या कह सकते हैं, right? So anyways, take a good care of yourself. अपना ख्याल रखिएगा. Again, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ट्यून इन करके देखा, सुना, समझा. शायद इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिए. इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं. फी अमान अल्लाह. अल्लाह हाफिज़.